Hello everyone, how are you? I hope you will be safe and fine and doing well. So, welcome all of you in another module of Matrices series. So, in the previous module, I have discussed some problems based on systems of linear equation. So, in this module, I will continue with some problems based on the systems of linear equation. So, without losing a time, I come on the topic. As you are looking here, I have written a question on the paper which have to solve it. So, firstly, I understood the problems. This is a system of linear equation containing three equations, right? And the question is that so that the system of equation doesn't have solution unless a plus c is equal to 2b, a, b, c are in AP. ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं. ये क्वेश्चन मैंने लिखा है. So that the system of equation doesn't have solution. इस इक्वेशन में शो करना है कि जो सिस्टम है उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है अनलेस a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, a, b, c are in AP. यदि आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP पढ़ा है क्लास 10th में या 11th में, तो जो AP की प्रॉपर्टी होती थी a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करने हैं. जब हम ये प्रूफ कर लेंगे तो ऑलरेडी ABC जो है हमारी वो AP में ही होगी, राइट. तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा 3 टर्म में सोल्व हो रहा होगा. पहले हमें शो करना है कि सिस्टम के कोई सॉल्यूशन नहीं है. दूसरे a प्लस सी इज इक्वल टू 2b और ABC आर इन द AP. तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अब मैं अप्रोच ले रहा हूँ. काफ़ी मेन क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया है सेमेस्टर पेपर में और कभी कभार इससे क्वेश्चन आए भी हैं गेट में या नेट JRF के भी पेपर में, IIT जैब में भी कभी कभार देखने को मिल जाता है. तो मैं अब सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को. सबसे पहली हमारी प्रोसेस होती थी मैट्रिसेस को डिफ़ाइन करने की, राइट. कैसे हम मैट्रिसेस डिफ़ाइन करेंगे? इट इज़ टू ईजी. फर्स्टली वी हैव टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ all the variables retains as right hand side. So the coefficient of x is 3 in the first row, the coefficient of y is 4, sorry this will be y, the coefficient of y is 4 and the coefficient of z is 5. In the second row the coefficient of x is 4, the coefficient of y is 5 and the coefficient of z is 6. In last row the coefficient of x is 5, the coefficient of y is 6 and the coefficient of z is 7. Variables we have x, y and z, and the right hand side term is ABC. So this is the required form of equation that we have done in each step. So after it we will proceed our solution. Firstly step was preparing a augmented matrices, right. So here you are able to see that I am
writing it in the augmented matrices form. So the required form will be in this form: 3 4 5 augmented A, 4 5 6 augmented B, 5 6 7 augmented C. It is a first step. Now second step is reducing in echelon form and finding the rank, right? So echelon form, I also have shared the property of echelon form in the previous module. So if we see the property of echelon form, the property say that all the non-zero entries will be upper index, right? And all the zero entries should be or must be in lower index. So firstly we have to reduce it in the echelon form. So in converting the echelon form, we must have necessary to applying some transformation by which the matrix becomes in the echelon form. So the transformation will be, the required transformation will be R1 transformation R2 minus R1. When we apply this transformation, then some changes in the first row of matrices. 3 minus 4 minus 3, 1, 5 minus 4, 1, 1, B minus A, right? 4, 5, 6, B, 5, 6, 7, C. So in the last index, all leading entry is non-zero. So to becoming in the echelon form, we have to convert all the entries in zero as well as in the second row also. So to becoming all the entries zero, we have to apply some transformations, that is for R2, R2 minus 4R1, R3, R3 minus 5R1. So the transformation will be 1, 1, 1, 0, 1, 2, 1. This will be B minus 4B plus minus 3B plus A. This will be minus 3B plus A. This will be 0. This will be 1. This will be 2. And this will be C minus 5B minus 5A. 5A minus 5B minus C. 5A
minus 5b minus c. So that is the required form. Here we see that the required form is not reduced in echelon form yet, because we have to make this term is 0 to be coming on the echelon, in the echelon form. So R3 minus R2. Here you are easily able to see that if we subtract R3 minus R2, then this term will be 0 and easily convert into the echelon form, right? So zero, it will be 0, it also will be 0, and the last leading entry will be A minus 2C plus B. So here we see that the required matrices is in the echelon form. Here the upper triangular matrices is formed. So this is a required echelon form. So our first part of the question is that we have to firstly prove that the system of equation doesn't have any solutions. So doesn't have any solutions. For no solutions, I already had discussed in the previous module about the formula for all the conditions like not solution, unique solution, and infinitely many solutions. For no solutions, firstly we have to determine that this system is inconsistent. If we conclude the system is inconsistent, then this system has no any required solutions, right? So let us see how can we find rank. So rank of A, here the leading entry is in this matrix is 2, so the rank A also be 2, and the rank of AB, here you see that the rank associated rank AB of the matrices is 3. I also have shared the concept of rank of matrices in the previous module. If you doesn't watch it yet, then you can go and prefer my videos, right? So here we see that the rank R1 is not equal to R2. Here rank A, I have defined it by R1, and rank AB I have defined it by R2. So R1 is not equal to R2. So the given system of equation having no solutions, right?
So the first part of the question have solved. We have to solve two or more questions. A plus C is equal to 2B. Since we have to prove that A, B, C are in AP. If we prove A plus C is equal to 2B, then A, B, C are in AP also proved by this property. So here the lack of sheet, so I am not able to write here perfectly. So here you see that the last leading entry in this in the matrices in this form A minus 2C plus B, right? For no solution, property where U is equal to 0. So E plus C is equal to 2B. Here the result is obtained in class 10th and 11th. You already are familiar about the properties of arithmetic progression. Here we see that the sum of first term and the last term will be equal to the twice of the middle term. If you familiar AP in class 10th and 11th, so here we can write that. So by this property, ABC are in AP. इस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ए बी सी और ए बी सी ए पी में है. हमने यहाँ पे एक रिज़ल्ट भी निकाला है. ए प्लस सी इज इक्वल टू 2B. इसके हेल्प से हम बता सकते हैं कि ए बी सी जो है वो ए पी में है, राइट. एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने सोल्व भी किया है. काफ़ी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इसे सोल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा. जितने भी क्वेश्चंस इस पे बेस्ड था, आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड विद यू. फॉर मोर better result, you have to revise the problems more and more. So after completing the video, completing the video, I drop one question which I already have discussed in the previous module. You have to solve it and comment your answer in the comment box. तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है. ये क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस मॉड्यूल में मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ. सेम मतलब क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, न्यूमेरिकल चेंजेस हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़, बट कॉन्सेप्ट सेम है. पिछले मॉड्यूल में मैंने आपको लेमडा और म्यू की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके बताई थी. सेम क्वेश्चन है, आपको इसे खुद से सोल्व करना है और इसके आंसर जो है मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, यानी कमेंट आप कर सकते हैं इसका आंसर लेमडा और म्यू का. तीनों सॉल्यूशंस के लिए, फॉर नो सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए, राइट. तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे मैं कर चुका हूँ डिस्कस, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी. तो आज ये टॉपिक
हमारा कंप्लीट हुआ। अब मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में आपसे बात करूँगा होमोजीनियस के लिए, क्योंकि अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स देखा है वो नॉन होमोजीनियस का देखा है, राइट। अब हम देखेंगे होमोजीनियस के लिए। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बने रहें मेरे लेक्चर में, मॉड्यूल में हमेशा, और प्रैक्टिसेस आप करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल more and more. Have a nice day. Thanks for watching my